Okay, good evening, Girish. Okay, you are good. You are on time, before time. Great evening, everyone. Okay, good evening, Girish. Okay, you are good. You are on time. Okay, let us start. गुड इवनिंग एवरीवन। अभी ये जो प्रोग्राम है विच आई हैव स्टार्टेड, मतलब आई थॉट अबाउट इट, क्योंकि हम लोग जब एलआईसी पॉलिसी बेचने मार्केट में जाते हैं, एलआईसी पॉलिसी मार्केट में हम लोग एलआईसी पॉलिसी बेचना जब जाते हैं, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो क्या लगता है आपको? कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस? द बिगेस्ट चैलेंज विच वी फेस व्हेन वी गो आउट इन द फील्ड, ये कस्टमर को मिलने जा रहे हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर है। हाँ, वैभव इज सेइंग बिगेस्ट चैलेंज इज अपॉइंटमेंट। ओके, अपॉइंटमेंट। पोस्टपोनमेंट इज वन मोर चैलेंज। हाँ, पीपल डोंट लिसन टू अस। हाँ, लैक ऑफ अवेयरनेस। मिस्टर शर्मा, गुड, लैक ऑफ अवेयरनेस है तो अच्छा है, बिकॉज बिकॉज ऑफ दे देयर लैक ऑफ अवेयरनेस वी आर एबल टू मेक देम अवेयर एंड गेट पॉलिसीज, बट एनीवे रिटर्न ऑल्सो इज अ चैलेंज। ओके, तो ये जो मैं प्रोग्राम सोचा इसके बारे में, क्योंकि मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है, ये सबसे बड़ा ये धंधे में चैलेंज है, रिजेक्शन, फेल्यूर। अभी आपने जो भी बोला है, रिटर्न्स हुआ या जो भी आप बोल रहे हो, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है? उसका मतलब है फेल्योर। मतलब हम लोग किसी के पास जाते हैं, वो आपको रिटर्न कम है ऐसा उसको लगता है करके आपको पॉलिसी नहीं दे रहा है या आपको पोस्टपोन कर रहा है या आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है। हमेशा क्या हो रहा है? फेल्योर आ रहा है। फेल्योर क्यों आ रहा है? हम लोग को क्लोज नहीं हो रहा है। व्हेन आई गो टू मीट समबडी, आई शुड गेट द चेक, वो नहीं हो रहा है, तो फेल हो रहा है आदमी। तो 13.5-14 लाख एडवाइजर्स है, उसमें करीबन मेरे हिसाब से 20 और 1000 एमडीआरटीज है, और उससे भी कम सीओटी एंड टीओटीज है। तो मैंने सोचा कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसमें ये बिजनेस में सक्सेसफुल है। एमडीआरटी को मैं बोलूंगा सक्सेस है। एमडीआरटी एंड अबाउ आई वुड से दैट पर्सन इज सक्सेसफुल। तो मैंने सोचा कि ऐसे लोगों को हम लोग एवरी वेनसडे, ये जो फेलियर यूनिवर्सिटी मैंने नाम दिया है, फेलियर यूनिवर्सिटी मैंने क्यों बोला है? क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग सीखते हैं फेल्योर से। फेल्योर टीचेस यू मोर देन सक्सेस। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग जब फेल्योर हो जाते हैं तो हम लोग उसमें सीखने के बगैर, इंस्टेड ऑफ लर्निंग वी फील डिसअपॉइंटेड, और हम लोग काम करना कम करते थे या छोड़ देते। तो वेन एवर somebody is faced with failure, he has got two options: either learn from that and become better, either learn and become better, or get disappointed and become bitter. तो मैं आप लोग को ये एवरी वेनसडे रात को 9 बजे हम लोग ये सेशन करेंगे, वेयर आई विल रिक्वेस्ट फ्यू सक्सेसफुल पीपल इन एल आई सी हु आर ऑलरेडी डूइंग एमडीआरटी, डबल एमडीआरटी, सीओटी, टीओटीज, एंड वी विल आस्क देम हाउ वाज देयर जर्नी। वो लोग को क्या सब कुछ आराम से हुआ? क्या उनको लोगों ने शॉर्ट टर्म या लो रिटर्न या पोस्टपोनमेंट, ये अपॉइंटमेंट नहीं देना, ये सारी चीजें क्या उनके साथ नहीं हुई? जैसे वो गए काम हो गया? तो ऐसा तो शायद नहीं है। तो हम लोग को उन लोग से बात करनी है और समझना है कि क्या हुआ। एंड मोस्ट ऑफ द गाइज, अभी शायद कोई आपको दिल खोल के बताए नहीं बताए, लेकिन मैं ऐसे लोगों को रिक्वेस्ट करने वाला हूँ यहाँ आने के लिए जिनको मैं जानता हूँ, जो ऑलरेडी एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी है। और मैं उनको ये बोलने वाला हूँ कि हाउ, व्हाट फेल्यूर्स यू फेस्ड, और वहां से आप कैसे बाहर निकले, आपको कितना फेल्यूर आया, उससे आपने क्या सीखा, और क्या कैसे बाहर निकले, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर फर्स्ट फ्यू मिनट्स दे विल टॉक अबाउट देयर फेल्यूर्स एंड लर्निंग्स एंड सब्सिक्वेंट सक्सेस। और उसके बाद में आप लोग उनको सवाल पूछ सकते हो। मतलब व्हाट यू कैन डू इज, आप चैट बॉक्स में, आप चैट बॉक्स में
आपका सवाल टाइप करो, एंड आई विल आस्क हिम दैट क्वेश्चन। क्योंकि हम लोग जूम पे है, आप लोग यूट्यूब पे है, तो मैं उनको वो सवाल पूछ के उनसे मैं आंसर, मतलब यू विल बी एबल टू लिसन टू दैट आंसर। तो आपके सवाल आप रेडी रखो, अगर आपके वो सवाल है, लेट कोई भी पॉलिसी के बारे में, पॉलिसी के फीचर्स के बारे में सवाल मत करो, क्योंकि वो सब नेटवर्क अपना इंटरनेट पे अवेलेबल है। ऐसा कुछ सवाल करो जो सेल्स रिलेटेड है, माइंडसेट के रिलेटेड है, उसके हिसाब से करो। अभी अगर मैं आपको बोलूंगा कि कोई एक बंदा है, एक सेल्स पर्सन है, जिसने महीने में, एक कोई एडवाइजर, उसने महीने में 2,000 लोगों को उसने ट्राई किया मिलने का, 2,000 पीपल को मिलने का ट्राई किया पॉलिसी के लिए। और कोई दूसरा है जिसने महीने में 200 लोगों को मिलने का ट्राई किया। तो ये आदमी 2,000 लोगों को मिला, किसी ने रिजेक्ट किया, किसी ने हकाल दिया, किसी ने मीटिंग किया, किसी ने पॉलिसी दिया 2,000। और ये दूसरा जो है 200, इसने 200 लोगों के पास गया, किसी कोई मिले कोई नहीं मिले, कोई रिजेक्शन करा, कोई पॉलिसी दिया, जो भी इक्वल। सो जो 2,000 लोगों को मिले और जो 200 लोगों को मिला, तो जो 2,000 लोगों को एक महीने में मिला है उसका नाम है समझो ए फॉर अमिताभ, ए। और जो 200 को मिला है उसका नाम है समझो बी। जो 2,000 लोगों को मिला और 200 लोगों को मिला, तो सक्सेसफुल कौन होगा? ए जो 2,000 लोगों को मिला, कि बी जो 200 लोगों को मिला? कैन यू टाइप ए और बी? If somebody meets 2,000 people in a month, and somebody A meets 2,000 people in a month, and B meets 200 people in a month, who will be successful? So A. Oh, okay, very good. A. So everybody knows it is our obvious answer. A will be more successful. तो हमारे बिजनेस में अगर आप बोलोगे कि इफ आई हैव टू आस्क यू, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है कि 90%, ये बिजनेस में 90% लोग आपको शायद ना बोलेंगे। आप इसको अप्रोच करोगे, 90% पीपल माइट से नो, अभी नहीं चाहिए, बाद में देखता हूँ, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ होगा। तो 90% रिजेक्शन है। सो 90% ये बिजनेस में रिजेक्शन है। ओके। अभी जो ए आदमी सक्सेसफुल हुआ, जिसने 2,000 लोगों को मिला, ये ए आदमी ने कितने नो सुने, एन ओ, कितने रिजेक्शन सुने? ए जो आदमी से 2,000 लोगों को अप्रोच किया, हाउ मेनी पीपल मस्ट हैव सेड नो टू हिम? द पर्सन हु मेड 2,000 पीपल, हाउ मेनी नोज ही मस्ट हैव हर्ड, एन ओ? इफ इट इज 90% रिजेक्शन रेशियो, जो मुझे लगता है, अगर आपको लगता नहीं तो आप मुझे बताइए, 90 नहीं, 50 है, 40 है, 10 है? तो इफ इट इज 90%, इट इज 1,800, बट एनीवे, कौशिक इज सेइंग 1,600, सागर इज सेइंग 1,800। तो 2,000 लोगों को वो आदमी मिला और 1,800 लोगों से ना सुना, 1,800। एंड पर्सन हु मेड 200 पीपल, वो कितना लोगों से ना सुना? हाउ मेनी पीपल सेड नो टू हिम? इफ इट इज 80%, हाँ, कौशिक इज सेइंग 80%, ओके। तो अगर 200 लोगों को मिला और 90% रिजेक्शन रेशो पकड़ के चल रहा हूं, मैं 90% रिजेक्शन पकड़ के चल रहा हूँ, सो हाउ मेनी विल से नो टू अ पर्सन हु हैज मेड 200 पीपल? हाउ मेनी नोज ही हर्ड? सागर इज सेइंग 180। तो आप खुद देखो, द पर्सन हु मेड 200 पीपल, द पर्सन हु मेड 200 पीपल, ही heard 180 no's. The person who made 2,000 people, he heard 1,800 no's, 10 times. अभी ये नो, इसने 1,800 ना सुना, इसने 180 ना सुना है। तो ज्यादा बड़ा फेल्यूर कौन है? हु इज अ बिगर फेल्यूर? फेल्यूर मतलब क्या? जो ज्यादा ना सुनता है वो फेल्यूर है, उसने ज्यादा लोगों से ना सुना। सो ए इज अ बिगर फेल्यूर कि बी इज अ बिगर फेल्यूर? बराबर, 1,800 वाला राम, करेक्ट, 1,800 वाला।
ए इज अ बिगर फेल्यूर, ए। तो ए जो है उसको हम लोग बिगर फेल्यूर बोल रहे हैं बिकॉज उसने 1800 ना सुना। बी को हम लोग लेसर फेल्यूर बोल रहे हैं बिकॉज उसने सिर्फ 180 ना सुना। लेकिन आप ध्यान से देखो, जिसने 1800 ना सुना, जो ज्यादा फेल हुआ वही सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि उसको 200 पॉलिसीज मिली और इसको 20 पॉलिसी मिली। तो जो ज्यादा फेल्योर होता है वही ज्यादा सक्सेसफुल होता है। जिसने 1800 ना सुना, उसी को 200 पॉलिसीज मिला। जिसने 180 ना सुना, उसको 20 पॉलिसीज मिला। जस्ट इमेजिन, जस्ट अंडरस्टैंड। तो इसके लिए ये बिजनेस में जितना ज्यादा ना सुनेंगे, जितना ज्यादा रिजेक्शन सुनेंगे, जितना ज्यादा फेल होंगे, उतना ही आदमी सक्सेसफुल होगा। हाँ, जिस आप में से जो लोग सोच रहे कि बी बड़ा फेल्योर है, नहीं है। फेल्योर और सक्सेस जो है, आप आउटपुट पे देख रहे हो, आउटपुट पे मत देखो। जो आदमी ने 200 पॉलिसीज ली, उसने 1800 बार वो फेल हुआ, वो 1800 बार फेल हुआ। दूसरा तो खाली 180 टाइम्स फेल हुआ। फेल्योर में वो 1800 है, 1800 फेल्योर। ही इज 180 फेल्योर, 10 टाइम ज्यादा फेल्योर है, इसके लिए 10 टाइम ज्यादा सक्सेसफुल। तो हम लोग क्या करते हैं, सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। जो ये मैं सेशन कर रहा हूँ, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एमडीआरटी सीओटी टीओटी को बुला के उनसे बातें करेंगे। तो हम लोग को पहले तो वी शुड लव फेल्यूर, वी शुड लव फेल्यूर। धीरू भाई अंबानी टू से लव, आई एम सॉरी, इज टू से फेल फास्ट, फेल ऑफन, फेल फॉरवर्ड। फेल फास्ट, फेल ऑफन, फेल फॉरवर्ड, ये तीन चीजें हमेशा याद रखो। फेल फास्ट, बहुत ज्यादा फेल हो जाओ, बार बार फेल हो जाओ, फेल ऑफन। एंड फेल फॉरवर्ड, फेल फॉरवर्ड मतलब हर एक फेल्योर से कुछ सीखो। फेल फॉरवर्ड मतलब गो वन स्टेप अहेड वंस यू फेल। ओके, सो आज लेट मी कॉल अवर गेस्ट फॉर टुनाइट, इज मिस्टर भारद्वाज नारायण। सो लेट अस वेलकम हिम। So Good evening, sir. thank you, Mr. Bharadwaj, for accepting our invitation. And we are fortunate to talk to you. All our advisor friends were there on the meeting right now. So you can just talk about your achievements in LIC, like double MDRT and all that, and your past experience, like you were CFO. So let them understand your background, and then you can talk us through some of the failures which you have gone through and the learnings and how that shaped your success. Please. And then Sure, after sir. you are through, kindly let me know so that I will make the forum open for question answers. Thank you. Sure, sir. Thank you for the opportunity and the platform. Good evening, my dear friends. So I was, after my commerce graduation and chartered accountancy course, I got into a corporate company, a luxury fashion house in the year 1998. And from then on, for the next 20 years, I happened to be in this one organization as its chief financial officer. So I was in such a domain where we used to work with the biggest names in international fashion like Gucci, Armani, Christian Dior, Louis Vuitton, and so on. And after a 20-year stint in this high-paying, high-profile job, after having traveled the world, I thought I'm right now at crossroads of my career. I need to do something next. But then I didn't want to get into another job or go back to the corporate world. I wanted to follow my passion. तो इसलिए मैं इंश्योरेंस के धंधे में आया, क्योंकि मुझे रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में बहुत दिलचस्पी थी। इसलिए मैंने इस धंधे में आया 2018 में। So I've been practicing insurance for the last 6 years now. I've been doing double MDRT since 4 years and also a Galaxy Club member. That's my qualification in my industry today. So firstly, this very topic, failure university, is a fantastic one, sir, because I recently heard in a convention that there are many books and stories when it comes to success, but there are very few or none when it comes to failures.
So हम जब सुनते हैं सक्सेसफुल लोगों से, जब वो बात करते हैं और शेयर करते हैं उनके एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं, मगर फेल्यूर के बारे में बहुत कम सुनाई देता है हमें. So this is a very fantastic initiative that Mr. Prashant Sawant has taken up, and I'm very happy to be part of this. But talking about failure, I also had learned recently in one of my training programs that the very starting stage of selling for any salesman, no matter what he is selling, actually happens to be begging. और ये चीज मैंने खुद किया है मेरे धंधे में. 2018 में जब मैं इस धंधे में आया, मुझे पता नहीं था कि किससे मिलूं, कितने लोगों को मिलूं, क्या बात करूं, कैसे इंश्योरेंस के बारे में उनको पूछूं. ये सब मेरे चैलेंजेस थे. तो आई लिटरली started begging when it comes to insurance sales. In 2018, when I got in here, I started going to my local shopkeepers. I can remember these people. One of them was a stationery guy, another one was an organic foods store owner. I would just go there when they were busy with their customers, and I used to have a conversation with them. I would tell them about myself. मैं LIC से हूँ, फलाना फलाना पॉलिसी है, आपको ये अच्छा होगा अगर आप लेंगे तो, करके जाके मैं बोलता था इसके बारे में. और मैं आधा घंटा, 1 घंटा, कभी कभी 2 घंटे तक भी मैं वहां रुक के, खड़ा होके मैं उनसे बात करता था और उनकी इंतजार कर रहा था ताकि वो मेरे से बात करें. मगर वो मेरे से बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके खुद के कस्टमर्स थे जिनको देखना था. तो but I was feeling very sick in my mind. I was like, what am I doing? मैं इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए भीख मांग रहा हूं. तो बहुत बहुत बुरा लग रहा था मुझे. ऐसा कुछ 4 से 6 महीना ऐसा चला. Then when I used to go and keep waiting at these stores and shops, uh, dying to have a conversation, not knowing where to start, how to sell insurance, what plan, how do I understand his need, because the man is not opening up, and so on. So this is one sort of failure that I faced in my profession. That's because of my own doing, because I was not able to articulate myself. I was not able to, connect myself well with my prospects. ये मेरी कमी थी. बिल्कुल वैसे ही इस धंधे में आने के बाद 2-3 महीने में ही मैंने क्या किया, मैं BNI ज्वाइन किया. BNI एक जबरदस्त नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, पूरे दुनिया में है. और मैंने मेरा लोकल चैप्टर में ज्वाइन करने के बाद मैं क्या किया कि मुझे पता नहीं था कि BNI का प्रिंसिपल्स क्या है, उनका तौर तरीका क्या है करके. तो मैंने मेरे BNI चैप्टर में कुछ 40 लोग मेंबर्स थे. तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने इंश्योरेंस को बेचना शुरू किया इन 40 लोगों को. मुझे तब पता नहीं था कि BNI में एक गोल्डन रूल है. कहा जाता है कि इन BNI यू ऑलवेज सेल थ्रू द रूम, यू डोंट सेल टू द रूम. तो मुझे पूछना था कनेक्शंस, रेफरेंसेस, रिकमेंडेशंस मेरे दोस्तों से जो BNI के मेंबर्स थे, मगर मैं इन दोस्तों से ही पॉलिसी मांग रहा था. ये गलती भी मेरे से हुई. कम से कम 1-1.5 साल तक ये गलती होती रही. That's another sort of failure that I faced in my profession. And the third type is where क्योंकि मैं नेटवर्किंग के बारे में बात कर रहा हूँ, नेटवर्किंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि BNI, रोटरी, लायंस, टोस्ट मास्टर्स, फलाना फलाना. तो मैंने रोटरी भी ज्वाइन की. रोटरी में ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ कि ऐसे एक कन्वेंशन में, रोटरी के कन्वेंशन में एक बहुत बड़े व्यक्ति आए जो CEO थे
एक इडली डोसा बैटर कंपनी के सीईओ, यहाँ कर्नाटक में बहुत फेमस है। उसका नाम है, कंपनी का नाम आईडी फ्रेश फूड्स। तो इस कंपनी के फाउंडर जो है मुस्तफा करके, वो आए थे बात करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए सब रोटेरियंस को। और उनको मिलने के बाद वहां मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ली और उन्होंने मुझे मिलने के लिए वो तैयार भी थे। अगले ही दिन मैं उनके कैबिन में था। ये कंपनी का टर्नओवर तब 6 साल पहले कुछ 2,500 करोड़ था। तो सोचिए कि मैं ऐसे एक बड़ी व्यक्ति से मिल रहा हूं और मुझे नहीं आ रही थी कि मैं क्या उनसे बात करूं, कैसे पूछूं करके। तो मैंने सीधा आ गया मुद्दे पे कि इंश्योरेंस के बारे में क्या सोचते हैं आप, क्या आपने लिया है ये वो। तो क्योंकि वो मुसलमान थे, उन्होंने मुझे सीधा जवाब दे दिया कि देखो, मेरे रिलीजन में मुझे कहा गया है कि इंश्योरेंस नहीं लेना है, इंश्योरेंस मेरे लिए ठीक नहीं है करके। तो मुझसे इंश्योरेंस के अलावा कुछ और चीज के बारे में बात करो, इंश्योरेंस के बारे में बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं, तुम्हें मैं कनेक्ट कर सकता हूं मेरे एचआर मैनेजर और अकाउंट्स मैनेजर से। उनसे जाके तुम बात कर सकते हो, और अगर एम्प्लॉयज को ये चीज पहुंचाना चाहते हो, ये कर सकते हो करके। तो मैं बहुत खुश हो गया। कम से कम मुझे कंपनी के एम्प्लॉयज प्रोस्पेक्ट्स जैसे मिल रहे हैं मुझे, वो भी 2-3 हजार प्रोस्पेक्ट्स। क्यों नहीं करके मैं उनको शुक्रिया अदा करके मैं बाहर निकला और मिला उनके मैनेजर से। मगर वो दोनों मैनेजर्स इतने बिजी थे कि मैं उनसे ठीक तरह से मिल नहीं पाया उस दिन। और बाद में जब भी फोन कर रहा था और मिलने की कोशिश कर रहा था, वो हो नहीं रहा था। सो it was embarrassing for me to go back to the founder and tell him, saying, your people are not listening, they're not taking my calls. It was really, really embarrassing. So I gave up. That was another type of failure I faced. And lastly, before I hand over back to Mr. Prashant, मैंने क्या किया था कि in the first few days of my profession, I used to watch a lot of YouTube videos about life insurance, और लाइफ इंश्योरेंस क्या क्या बेनिफिट देता है एक व्यक्ति को या एक परिवार को, ये सब मैं सुन के मैं एक लिस्ट बनाई। बनाने के बाद मैं इतना खुश हो गया और हैरान हो गया, क्योंकि मुझे मुझे खुद पता नहीं था। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होते भी मुझे पता नहीं था कि एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में से एक परिवार को कम से कम 40 से ऊपर बेनिफिट्स मिल सकता है करके। तो मैंने ये लिस्ट बना के बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस करके मैं सोचा कि मैं कंपनी मैं कंपनियों को विजिट करूं और वहां जाके परमिशन मांग के एचआर मैनेजर से मैं लोगों को अवेयरनेस टॉक्स दूं करके। और ये चीज भी करना शुरू किया। ऑफ कोर्स मन में एक सेल्फिश मोटिव था कि मैं अगर ये करता गया तो मुझे पॉलिसियां मिल जाएगी, भर भर के मिल जाएगी सब एम्प्लॉयज से करके। तो मैंने ऐसे कुछ 5 से 7 अवेयरनेस प्रोग्राम्स या टॉक्स दी। मगर क्योंकि मेरा लिस्ट इतना बड़ा था और मैं कोशिश कर रहा था उन 40 चीजों को एक एक करके शेयर कर दूं करके, फुल जोश में, एंथुजियाज्म में, क्या हो गया कि वो बहुत बोरिंग हो गया सब लोगों को, और रिजल्ट बहुत ही घटिया हो गया मेरे लिए। तो ये सब मेरे ये सब कुछ फेल्यूर्स है जो मैंने फेस किया मेरे प्रोफेशन में इन माय इनिशियल इयर्स। ओवर टू प्रशांत सर। प्रशांत सर। या एक्सलेंट, वेरी गुड। आप में से किसी को कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज टाइप करो। आई वुड लाइक टू आस्क यू क्वेश्चंस। जैसे आप जैसे मुस्तफा, दैट केस यू टॉक्ट अबाउट, उनके जो मैनेजर्स थे उन्होंने ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया।
then subsequently what happened so that you could get something? So if you can throw some light on that. So मुझे इस कंपनी से कुछ आया नहीं, लेकिन I kept on trying with other companies, and I was able to connect better to the promoters and then to the HR managers, and slowly I was able to penetrate even downwards to all the employees of companies. Like me being from Bangalore, I was able to connect with a lot of small IT startups, SMEs, and so on. Okay. So what happened was, because I kept trying and trying and trying, I also told myself Okay. the list of मतलब वो जो मुस्तफा जो है उनके वहाँ जो आपको जो फेल्योर आया उसमें से आपको जो भी सीखने मिला, तो सब्सिक्वेंटली आप जब ऐसे सिमिलर लोगों के पास गए, दैट फेल्योर हेल्प यू देयर. एग्जैक्टली यस. सो क्या क्या चीज नहीं करना है मुझे, क्या क्या बात नहीं करना है, या क्या कैसा शुरू करना है कॉन्वर्जेशन को. मुझे ये चीज जो होता है, एक एक मीटिंग में जब पहली बार मिल रहे हो एक प्रोस्पेक्ट से या एक व्यक्ति से, प्रिलिमिनरी प्लेजेंट्रीज, ये चीज सुनने के लिए मुझे कुछ 1.5 साल लग गया इस धंधे में. एंड इट टुक मी मोर टाइम टू implement this with my prospects, to be able to connect with them, to understand them, their family, their needs, and then slowly present to them something which they will find it attractive and really necessary for their requirements. Okay, so for all of you, even Atanu, you're asking how he talked about the failure what he went through and that subsequently made him success. और कुछ questions है. Uh, Rajesh is asking, how did you overcome this problem of this heartbreaking rejections? How you overcome those rejections and achieved Galaxy and all that? Very good question. So in the initial days, it was very tiring. It was I was taking all these rejections personally, extremely personally, because I had just then come from a high profile corporate job, and here I was getting rejected left, right, and center by people who I know, who I don't know, from all categories. So I used to somehow motivate myself, because I used to watch a lot of videos on life insurance sessions and trainings. I was able to motivate myself and tell myself, okay, no, this is just a part of the process, and it's important for you to stay grounded here, and you will see success eventually. Now, if I can share this, I was feeling in my initial days like a caterpillar. So I don't know what you say for caterpillar in Hindi. So when we see a caterpillar, you will see success eventually. Now, my voice is echoing, I think. I was feeling in my initial days. Just a minute. Sorry, continue. Okay, so I was talking about the caterpillar story. So I don't know what caterpillar is called in Hindi. So when accidentally a caterpillar falls on any part of our body or on our dress or something, what do? We try to, get rid of it by using our fingers, like, striking a carom striker on the carom board. We do that and we get rid of it. Now, that was exactly how I was feeling in my initial few months in the profession. But after working on myself continuously by way of getting trained by top class trainers in India, including you, sir, Prashant, sir. So I was able to take myself to a level where the caterpillar eventually becomes a butterfly. When people see a butterfly, they don't do this anymore. With the same two fingers, they do this. They appreciate the beauty of a butterfly. So to get to that stage of butterfly from caterpillar took me quite some time.
and a lot of consistent effort, time, and also some money, because I had to invest in these trainings and all of that. And that's exactly how I was able to overcome and reap the benefits of this profession. Very good, excellent. In fact, everybody should understand this. Excellent way of presenting caterpillar to butterfly story. One more question is there. Since you yourself are a chartered accountant, how you managed, if you have any other trick up your sleeves on handling chartered accountants' objections? So, firstly, it so happens that I have a chartered accountancy background and I've practiced it for many years. All that is there. That's bonus. But that's actually completely besides the point. Because जो planning as life insurance advisors or financial advisors जो हम करते हैं हमारे clients के लिए, वो होता है clients का life का balance sheet. लेकिन एक chartered accountant क्या करता है? वो सिर्फ clients का business का balance sheet के बारे में सोचता है या उसके ऊपर काम करता है. Okay, and a chartered accountant works only from a, with all due respect, he only works with a tax angle. Customer या client का tax कितना कम करना है, कम कर सकता हूं करके ऐसा वो सोचता है और advice देता है. A chartered accountant will not be able to ever understand the importance of risk management, okay, the importance of ensuring his clients guaranteed monthly income for lifetime, and so on and so forth. There are the kind of value that we as financial advisors add to our clients' lives on an everyday basis is far, far, far more superior compared to what value a chartered accountant adds to his client's business. So there is no, I never had any sort of clash or tiff with a chartered accountant in terms of my profession. On the other hand, a lot of my, because I belong to this profession, I also used to belong to the chartered accountancy profession before. I have a lot of chartered accountant friends who are qualified, who are practicing. And today I'm in a stage where these chartered accountants, मेरे बिने जो पूछे बिना वो मुझे references देते रहते हैं. Regular basis, I keep getting references from my chartered accountant contacts and clients. सही है. इनफैक्ट मैं आपके बारे में जितना जानता हूँ, आई हैव सीन दैट यू आर वेरी सीरियस अबाउट लर्निंग, और इतना इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी यू आर ऑलवेज ऑन द लर्निंग मोड. ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम नॉलेज. अगर आप सीए के सामने बैठते हो और यू थिंक यू कैन मैनेज सीए क्वेश्चंस, हम लोग सीए को डरेंगे नहीं. तो लर्निंग इज वन वेरी गुड थिंग यू आर डन. सी वन क्वेश्चन इज, ये जो 40-40 बेनिफिट्स यू आर टॉकिंग अबाउट, सो डू यू हैव दोस बेनिफिट्स विथ यू? Like somebody is saying, if we can give us those benefits. Okay, of course I do have, because I treasure all these things. They were all my hard work done in my initial days. I've kept them. I may not use them today, but I do have the list. Not right now, but I have. Yeah, ideally all of you, जैसे उन्होंने, हम लोग ने क्या सीखना चाहिए कि उन्होंने 40 बेनिफिट लिखा कागज पे, और ऑल ऑफ यू, अगर आपको रेडीमेड मिल जाएगा ना, उसकी वैल्यू शायद नहीं होगी. मैं अगर इफ आई वाज एडवाइजर, मैं सोचता यार मुझे भी बेनिफिट लिखने हैं, तो मैं इसे लिखूंगा कि 40-50 बेनिफिट लिखूंगा. ये कंसेप्ट हम लोग लेना चाहिए. सो दैट इज व्हाट वी शुड डू. अदर थिंग इज, समबडी इज आस्किंग कि ओपनिंग जॉब करते हो अभी कॉल का, आइदर यू गो टू अ शॉप और कहीं भी जाते हो, तो ओपनिंग कैसा होता है, उसके बारे में अगर कुछ बताओगे तो इट विल हेल्प. So पहला चीज, शॉप्स या कंपनीज, मैं जैसे कोल्ड कॉल करने के लिए कोशिश कर रहा था उन दिनों में, वो मैं नहीं करता आजकल. So my clients today come only by way of references and recommendations, not otherwise. And so I've reached a stage where I have even stopped asking for referrals, because without me asking every single day, I get minimum between 3 to 5 referrals. अगर मैं एक दिन पूरा दिन ट्रेनिंग या कॉन्फ्रेंस में बैठा रहता हूँ, कॉन्फ्रेंस के बाद जब मैं फोन खोलता हूँ, कम से कम 3 से 5 रेफरेंसेस होते ही है फोन में. सो बिकॉज दीज आर ऑल from trusted clients and
clients who trust me both ways, and they're all recommendations. My conversation with these prospects will be, of course, different as compared to a cold call. So my talk starts with, like I said, preliminary pleasantries, trying to understand where the client studied, which city, which college, etc., and then see if there are any common strings between both of us. And after about 15-20 minutes of normal or informal discussions, I then get to the point to understand what is it that the client is looking for. I ask them saying, so what do you expect from this meeting? मुझसे आप क्या चाहते हैं? What value would you want me to add to your family or your business? That's exactly how I start. And then after every single meeting, what I do is I make minutes of the meeting, and then I share these minutes with my client and see to what extent possible I can keep following up with the client in order to close all the open items in those minutes, which are all meant towards fulfilling client's goals. नहीं, ये बहुत जबरदस्त लर्निंग है फॉर एवरीबॉडी कि हम लोग जब मीटिंग करते हैं तो वो मीटिंग के बाद उसका मिनट्स ऑफ द मीटिंग, गैप्स इन हिज फाइनेंशियल प्लानिंग, ही इज सेंडिंग देम बैक टू, मतलब उनको समझ में आता है क्लाइंट को कि दिस पर्सन हैज वर्कड ऑन व्हाट डिस्कशन वी हैड, ऐसे ना हमने बातें की और चले गए. दैट इज वन. दूसरी बात, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड दैट यू आर गेटिंग रेफरल्स. और वो रेफरल जो है, जो आपने पहले जो बीज बोया था, इफ यू डील विद एवरीबडी विद कंप्लीट ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, मेरे को लगता है कि अगर आपने 100 जन को पॉलिसी बेचा, 100 पीपल विथ कंप्लीट जेन्युइनिटी, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, आपको कोल्ड कॉल करने की जरूरत नहीं है. वो 100 लोग ही आपको 1000 लोग लाके दे सकते हैं इफ यू हैव सोल्ड हिम प्रॉपर्ली. तो मैंने कहीं पढ़ा था कि वी शुड नॉट सेल पॉलिसी विच यू आर डूइंग. एक्चुअली वी शुड नॉट सेल पॉलिसी, वी शुड सेल रिलेशनशिप. We should say relationship. If they like you as a person, if they buy your relationship, they will keep on, they will work as a unpaid agent for you, which is happening. Absolutely. So ये बहुत बड़ी learning है हम सबके लिए. We should create clients who will be our unpaid employees, who will get business for us. Correct? Exactly. Okay. So Now, क्योंकि हम मिनट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैं उसको थोड़ा और अगर मैं डिटेल में जाऊं तो मैं क्या लिखता हूं कि मैं ये नहीं लिखता हूं कि MOM या मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ऐसा नहीं लिखता हूं. मैं थोड़ा हटके मैं उसको लिखता हूं कि minutes of the invaluable minutes spent with Mr. Prashant Sawant on so and so date and time. That will be the क्या heading. बात है, क्या बात, So क्या बात. when I learned this myself in one of the trainings from my most favorite guru, I was mesmerized. What a line! Minutes of the invaluable minutes. Okay. Very good, very good. Excellent. ये बहुत बड़ा लर्निंग है सबके लिए. Minutes of the invaluable minutes spent with your client's name. Very good. And now, Mr. Kaushik is asking, do you have any specific process by which you come to the policy? इनको कौन सी पॉलिसी देनी है, उनका जो आपने नीड एनालिसिस किया, उसके बाद में डू यू हैव एनी प्रोसेस कि भाई हाँ इनको मैं ये पॉलिसी देना चाहिए, इनका प्रॉब्लम ऐसा कुछ होगा तो यू कैन टॉक. दैट इज व्हाट देयर इज अ क्वेश्चन. बिल्कुल. अगेन ए गुड क्वेश्चन. मैंने कोरोना काल के तुरंत बाद जो सीखा वो ये था, किस प्रिंसिपल, KISS. क्योंकि हम लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स है, हमें एक आदत हो चुकी है या आ जाती है हमारे अंदर कि जो भी बात या जो भी चीज के बारे में हमें बात करना है, स्पेशली एक प्रोस्पेक्ट के सामने, और क्योंकि इसलिए भी क्यों हम बहुत बहुत ट्रेनिंग्स लेते हैं, एक आदत आ जाती है कि हम वो चीज को लेके या एक प्रोडक्ट को लेके या एक प्रेजेंटेशन को लेके बहुत ज्यादा बात कर देते हैं. उसकी जरूरत नहीं है, एक चीज. दूसरा चीज, स्पेशली आफ्टर कोरोना हम सब देख ही रहे हैं, the attention span of people, especially customers, is getting lesser and lesser. The customer does not have all the time in the world to understand all those 40 benefits, advantages, features, and so on and so forth. All he says is, tell me in a nutshell, what does this do for you? What does this do for me? Okay. Like we all know, as salespeople, the customer is always tuned to one radio station, and that radio station is called WIIFM, which is what is in it for me. So we need to. So what I do is, coming to the point, coming back to the question, what I do is
after understanding his needs and his goals, financial goals especially, both short term and long term, I first asked him to prioritize. Okay, you got these 8, 9 goals, great. So, but please put a ranking for each of these goals. So after he does that, I take the top 2 or top 3 of them, and I only discuss those things with him, because obviously it's never possible to attend to all those goals in one meeting, 1 month or 1 year. It takes time. Financial planning or financial freedom, it's a process. It's a lifelong process. So I only take those 2 or 3 goals that he has marked in terms of priority, top 3, and I start discussing those with him. And then I see what products that I deal with can match his requirement and fulfill his goal. And I start discussing those things with him. I never get into discussing any company name or any plan name, nothing of that sort. That's because I believe as financial advisors, we should be financial doctors. जैसे कि मरीज कभी नहीं पूछता है डॉक्टर को कि क्या दवाई दे रहे हो मुझे करके, उनको सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब है, जो भी लिखा गया है वो पर्ची पे वो खरीदता है और he gets well. It should be exactly like that when it comes to our profession. I don't allow my clients to even venture into asking what product, which company, and so on. If they ask, which they have every right to, my answer will be like you choose your doctor and not the medicine. In the same way, choose your financial advisor and not the insurance company or the investment company. By the way, I tell them, whatever product I may be suggesting to you, my dear customer, please don't take it for granted that it is something which you can buy by paying money, because the products I deal with are products of privilege. It is subject to eligibility. Bas, ho gaya. Of course, towards Very the good, excellent. end stages, Yeah, I tell them what product has been given and which company it is and so on and so forth. But I don't start my conversation with these names or company names anymore. It's irrelevant. excellent. In fact, now मैं समझ रहा हूँ कि Galaxy Club इतना, why there are very few people in Galaxy Club, because the quality of Galaxy Club people is unbelievable. What you are doing is tremendous. मतलब you are selling the solution, not the product, table number so and so. Very good. And one more point you talked about कि हम लोग इतना सारा ट्रेनिंग लेते हैं कि वहां जाके सब कुछ जो भी सीखा उसके सामने डाल देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो हम लोग उसको गन्ने का जूस देना चाहिए, गन्ने का लकड़ा नहीं देना चाहिए। ऑल दो स्टिक्स वी शुड नॉट गिव, उसको ग्लास भर के जूस जूस देना चाहिए। वेरी गुड। देयर इज वन गुड क्वेश्चन इज दैट समबडी इज आस्किंग, मिस्टर दास इज आस्किंग, आपका कोई सा डेली रूटीन, इफ समथिंग इज देयर लाइक दिस इज हाउ आई गो अबाउट माय डेली वर्क, सो दैट विल हेल्प अदर्स। सो इफ यू हैव समथिंग फिक्स्ड टू लेट अस नो, डेली रूटीन काइंड ऑफ। What can I say? I'm a workaholic from the time I started working since the age of 19, 20. And I love my job. I love my work, both in my corporate world when I was there and also here. I love this even more. And I have decided that I'll be doing this for the rest of my life, at least till age 95. So having said that, the routine and the timings and all of that is again a matter of detail. So in my case, I wake up at around 6 o'clock every day, and then I start with certain motivational sessions for myself. And my day at work starts at about 9:15. Nowadays, most of my time gets spent in the office because बहुत सारे मेरे clients Zoom पे आते हैं और office में ही आते हैं मिलने के लिए. तो मुझे बाहर जाना थोड़ा कम हो रहा है आजकल. और जैसे जैसे ही मैं ऑफिस से छोड़ता हूँ 7 बजे करीबन, उसके बाद भी मेरा काम चालू होता है घर में. I work from home, and then of course a lot of phone calls happen, a lot of consultations happen on Zoom calls, WhatsApp video calls, and phone calls. So that's how it is. But one thing that I would like to tell all my friends is, yes, the more time you spend with your prospects and customers, that is what will get you more money. And that's very important for us to learn. Great, great. So you are from place where Narayan Murthy is saying one should spend at least 70 hours a week.
So that is Exactly. the I was great. He thinking used to about that when you asked me the question. So 70 Narayan hours a used to week. leave home at 6 o'clock. Initially, he used to leave home at 6 o'clock and come back 9, 10. Anyway, there is one more Exactly. question called. I have not understood the question as such, but do you prepare personal balance sheet of prospects? Personal balance sheets of prospect, Mr. Das is asking. So personal, The maybe answer a is funnel or sales funnel or something like that. no. What a sales funnel got Prospect in. list. Like Oh, you have prospect list. prospect list with you. Of course, I have prospect list. When my SBA used to ask all of us in the unit meetings in the initial days, so how many people or how many numbers do you have in your prospect list? I used to be so embarrassed because I was not able to know whose names do I put in my prospect list and so on. So today, my prospect list at any point in time will have minimum 200 to 250 numbers, and it's growing. Of course, I also keep dropping names from my list from time to time. That's exactly why the growth is not exponential, because I only like to work with those clients and prospects who are serious about their family. करने के लिए एक लंबी चौड़ी प्रॉफिट लिस्ट बना के बैठ के कोई फायदा नहीं है. So I keep only those quality prospects in my list. Very good. In fact, this is also a first time. matlab, I have seen somebody. There is one more I have met, but you have more than 200 prospects at any given point in time. That is what I have been telling people. कि prospect list बढ़ाना चाहिए. Policy कितना आया? That is a by product. Prospect में कितने ला रहा हूँ? Prospect कितने generate कर रहा हूँ? That should be the focus ideally. There is one question where it is Mr. Kaushik Paul is asking कि average number of meetings आपका कितना होता है before you close the sale? Average. अभी आपका केस अलग है बिकॉज यू आर वर्किंग विद पीपल हु रिस्पेक्ट यू, ट्रस्ट यू, लाइक यू, एक्सपीरियंस योर सर्विसेज. लेकिन जनरली कितना मीटिंग होता है एवरेज मीटिंग्स? Okay, so there average it's a difficult question to answer because some clients take 5 to 7 meetings also, and in some cases it can get closed in just 2 meetings. आपका वीडियो बंद है मिस्टर भारद्वाज. या नाउ ओके. Sorry. Yeah, सो वन और टू मीटिंग्स. ओके. correct. Okay, so that question was that prospect list based on the premium what you are going to get. That is what he is asking. हम लोग जब प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाते हैं जनरली हम लोग प्रोस्पेक्ट लाते हैं, लेकिन डू यू हैव अ सिस्टम कि भाई इसको मैं ये नेटवर्थ वाइज ये क्लाइंट बड़ा है ऐसा कुछ आपका है सीक्वेंशियल और नॉर्मल प्रोस्पेक्ट लिस्ट का उसका जो सीक्वेंसिंग है वो कैसे कि ये महीने में आने वाला है इसके लिए ऊपर होगा या बढ़ेगा? So it is mostly chronological in the sense that client or prospect who has agreed to meet me the earliest. अगर मुझे कल 2 मीटिंग्स हैं, उनका नाम पहला होगा, बाकी सबका नाम ऐसे नीचे ओके. होता जाएगा. आइडियली इट शुड बी जैसे मैं बताता हूँ हॉट वार्म कोल्ड. Correct. द पीपल हु कैन बी कॉन्टेक्टेड दिस मंथ हॉट, नेक्स्ट मंथ वार्म एंड Correct. नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ इज कोल्ड. एंड ठीक है, एक्सलेंट, वेरी गुड. इट इज ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस. एंड आई थिंक बाकी सब लोग इनसे इंस्पायर होके हम लोग भी देखो इनका व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज आप यू आर थॉरली प्रिपेयर्ड एंड यू आर फोकस्ड ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स. और आप प्रॉब्लम से जा चुके हो. नाउ यू आपकी गाड़ी जो अभी 6th गियर पे है. इनिशियली इट वाज ऑन फर्स्ट गियर तो इट वाज गोइंग स्लोली विद डिफिकल्टी. आज इतना साल के बाद यू हैव रीच्ड दैट लेवल कि कस्टमर आ रहे. दैट इज द बिगेस्ट थिंग. मतलब प्यासा कुएं के पास आ रहा है कि भाई पानी चाहिए बिकॉज दैट प्यासा नोज कि मुझे यहाँ पानी मिलेगा. सो दैट इज हाउ वन शुड. मिस्टर अग्रवाल, म्यूचुअल फंड के बारे में जो है यूट्यूब पे आपको 552 वीडियो मिलेंगे. हाउ टू टैकल म्यूचुअल फंड. तो उसमें आप देखो लेट अस टॉक सेल्स पॉइंट. म्यूचुअल फंड को टैकल करने के लिए कोई भी बता सकता है. आपको अभी तक मालूम आइडियल होना चाहिए ना, तो बहुत सारे मिलेंगे. या मेरा खुद का एक वीडियो है म्यूचुअल फंड के लिए तो मैं आपको भेजूंगा. ठीक है फिर. एनी आई वुड से ऑल ऑफ यू आई एम रिक्वेस्टिंग, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने एक एक चीज जो आपने सीखा प्लीज टाइप करो. बिकॉज क्या मालूम है हम लोग ज्ञान सुनेंगे वापस जाके सो जाएंगे, ऐसा मत करो. यू कैन टाइप समथिंग विच यू हैव लर्नड एंड यू विल इम्प्लीमेंट, यू विल स्टार्ट यूजिंग. ऐसा कुछ है कि आप सबको मैं पूछूंगा कि आपका ऐसा कुछ आज के सेशन में आपने ये चीज मैं इंप्लीमेंट करूंगा बिकॉज आई हैव लर्न दिस, ऐसा होगा तो प्लीज टाइप करो.
और इनका जो मिस्टर भारद्वाज, आपका जो जो लेवल पे अभी पहुंचे हो, वो बहुत अच्छी लेवल है। बहुत बहुत कम एजेंट वो लेवल पे जा चुके हैं वेयर दे आर गेटिंग बिजनेस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। वो बहुत बड़ी बात है। बहुत जन को पूछता हुआ रेफरल मिलता है क्या, बोलते हैं नहीं मिलते। तो ये जो नाउ यू आर 3 से 5 रेफरल एवरी डे मिलना, मतलब यू देयर इज नथिंग बट यू हैव वर्क वेरी हार्ड एंड वेरी सिंसियरली, ऑनेस्टली एंड विद कंप्लीट नॉलेज। यही इसको दर्शाता है। अ, Ram is saying minutes of the meeting is what he has learned. He will start doing that. A prospect list and prioritizing WIIIFM people have learned that. Very good. Okay. Ujjwal Ghosh is asking for KISS full form. Oh, Ujjwal, I'm really sorry for not expanding that. मेरी गलती है. So ये जानना बहुत जरूरी है हमें, क्योंकि किसका मतलब क्या है. Keep it short and sweet. इसका मतलब क्या है हम सबको मालूम है एक्चुअली, क्योंकि अ, हर रोज हमें जब वीडियोस मिलते हैं या एक पीडीएफ मिलता है व्हाट्सएप पे, पहला चीज क्या देखते हैं हम उसमें. वीडियो क्या है नहीं देखते हैं, हम इतना देखते हैं कि इसका ड्यूरेशन क्या है. 10 15 या 30 सेकंड तक है तो वो वीडियो देखने का चांसेस ज्यादा होता है. उससे अगर ज्यादा हुआ, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं शायद उसको देखूंगा, नहीं तो उसको स्किप करके मैं चलता जाऊंगा. So this is the meaning of KISS. So keep our discussions simple and short, including your life insurance presentations as simple as possible, half page to 1 page. Don't bother about giving 5, 10, 20 page PDFs which comes out of softwares or lengthy Excel sheets. Never make that blunder. किसी के पास टाइम नहीं है ये सब देखने के लिए. जमाना बहुत तेज चल रहा है, सबके पास बहुत कम टाइम है. इसलिए ऐसे भी कहा जाता है कि लेस इज मोर. वेरी गुड. इनफैक्ट नेटफ्लिक्स पे मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उन्होंने बताया कि अभी लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हुआ है। और द शॉर्टेस्ट अटेंशन स्पैन है गोल्ड फिश का, विच इज 9 सेकेंड्स। एंड टुडे ह्यूमन बीइंग्स अटेंशन स्पैन इज 8 सेकेंड्स। एंड इफ यू सी यूट्यूब वीडियो, आप देखोगे यूट्यूब वीडियो देखोगे तो स्किप ऐड आता है, वो कितना सेकंड चलता है? 6 सेकंड्स। स्किप ऐड आएगा ना, 5 4 3 2 1 स्किप इट। तो 6 सेकंड रखा है क्योंकि 8 सेकंड हमारा अटेंशन स्पैन है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग सामने वालों को अगर पकाएंगे कि यार ये सुन, ये सोच, जीवन ऐसा कितना है, जीवन सरल कितना है, जीवन ये क्या है, जीवन जीवन ये उत्सव क्या करता है या धारा क्या करता है, तो वो मन में से स्विच ऑफ हो जाएगा। आपके सामने बैठेगा लेकिन अब दिमाग उसका चला गया, एंड नथिंग विल हैपन। ये बहुत सही है। इट हैज टू बी वेरी सिंपल एंड शॉर्ट विच एक्साइट्स हिम। Okay, thank you very much. Everybody is very happy. They have got a lot of things. So thank you, Mr. Bharadwaj. It was very nice of you. ये पहला ही inaugural session आपने किया है, and I will get people who are we have learnt a lot. Everybody has learnt a lot, and मेरे को भी बहुत सारा चीज आपके यहाँ से आज मालूम पड़ा. So मेरे को लगता है teacher is the one who keeps on learning. So teacher is not somebody who knows everything. So that uh, if you think you know everything, now only way is to go down. लेकिन जो टीचर बोलते हैं कि मैं सीखना, जैसे आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू, जो जिस तरह का आपका कंडक्ट है वो बहुत सही है, और आई वुड लाइक टू टेक इट टू एज मेनी एडवाइजर्स एज पॉसिबल इन माय लाइफ. सो ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, एंड लेट अस मीट ऑल ऑफ यू अगेन नेक्स्ट वेडनेसडे. हम लोग किसी ऐसे ही किसी जबरदस्त इंसान को मिलेंगे जो एमडीआरटी सीओटी टीओटी है, और उनसे भी हम लोग बातें करेंगे. आपके क्वेश्चन भी रेडी रखो, और थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग. थैंक यू वेरी. I would say one last thing before signing off. या As प्लीज प्लीज. human beings in general and as life insurance advisors in particular, I would like all of us to make a pledge that we will be lifelong learners. Thank you, sir, for this opportunity, and it's my privilege. Thank you and good night. वेरी गुड. लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये चालू रखो. और आई वुड से लाइफ लॉन्ग लर्निंग में क्या होता है, मतलब हमारा प्रॉब्लम क्या है, वी आर कॉल्ड ह्यूमन बीइंग्स, बट वी शुड बी कॉल्ड ह्यूमन डूइंग्स. सो वॉट एवर लर्निंग, देर आर 3 steps: ह्यूमन नोइंग, ह्यूमन डूइंग, एंड देन ह्यूमन बीइंग. दैट बीइंग विल बिकम एमडीआरटी. एवरीबडी वांट्स टू बी एमडीआरटी बट दे डोंट डू व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आज हमने जो भी सीखा उसमें से एक चीज भी हम लोग अगर कल डूइंग में लाएंगे, डूइंग,
you will be a good human being and a MDRT human being. Okay, thank you very much. Thank you, everyone. God bless you. Good night. Thank you.